हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी वाली हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीएससी की तरफ से एनएसडीएल पेन सर्विस को फिर से लाइव कर दिया गया है, जहां पर से आप लोग किसी भी व्यक्ति को आधार ई-केवाईसी और साथ में बायोमेट्रिक के थ्रू से आप पेन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर से बिल्कुल ही पेपरलेस रहेगा, यानी कि कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट बताने वाले कि सीएससी एनएसडीएल के थ्रू से किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को बायोमेट्रिक या फिर आधार ई-केवाईसी के माध्यम से पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एनएसडीएल का सर्विस सीएससी के तरफ से बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर से लाइव कर दिया गया है, जिसमें से आप सभी स्टेट के सीएससी वाले इसमें काम कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने डिटेल्स पोर्टल पे आज जाना है एंड यहाँ पर से सर्च करेंगे एनएसडीएल। तो आप यहाँ पर से एनएसडीएल जैसे ही सर्च करेंगे तो पेन सर्विसेज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप यहाँ पर से फर्स्ट में आप अपने सीएससी आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन होंगे, जिसके लिए लॉगिन विथ डिटेल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर से बताया गया कि नोट में अगर आप इसे क्रोम ब्राउज़र में यूज करें तो इसके बदले आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज करें, क्योंकि जो भी एनएसडीएल का सर्विस है वो बेसिकली मोजिला फायरफॉक्स में बेहतर तरीके से वर्क करते हैं। तो इसके लिए सिंपली से आप सभी लोग को यहाँ पर से पेन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर से अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड से इंटर करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर से लॉगिन विथ डिटेल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड और दिए गए कैप्चा को फिल करेंगे, जिसके बाद आप यहाँ पर से साइन इन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर से अपना सीएससी आईडी पासवर्ड इंटर कर लिए एंड यहाँ पर से साइन इन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा एनएसडीएल का। सबसे पहले आप यहाँ पर से एप्लीकेशन टाइप को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर से उसके बाद आप यहाँ पर से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, जिसके बाद सेलेक्ट पेन टाइप यानी कि फिजिकल पेन कार्ड, यानी कि जो भी आप पेन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर से बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। जिस भी कस्टमर को अप्लाई करें उनके एड्रेस में, और साथ में यहाँ पर से ईमेल आईडी में भी ई पेन सेंड कर दिया जाएगा। जिसका भी आप पेन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर से कंप्लीट नेम फिल करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर से फुल नेम इंटर करेंगे। जिसके बाद उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर से इंटर करेंगे एंड यहाँ पर से मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे। जिसके बाद आप यहाँ पर से ईमेल आईडी इंटर करेंगे एंड यहाँ पर से ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आप यहाँ पर से कस्टमर के लिए आप यहाँ पर से आप कंसल्ट देंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर से कंसल्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर से सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप लोग यहाँ पर से आपके जो भी सीएससी वॉलेट में उसमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को सबसे पहले आ जाता है पेन, यहाँ पर से आ जाता है ऑनलाइन पेन एक्नॉलेजमेंट एंड यहाँ पर से आप लोग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर से आप लोग को प्रोसीड टू पे के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो आगे का प्रोसेस आप लोग को यहाँ पर से वीडियो के डेमो के माध्यम से आप लोग को बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। On submission, user will be navigated to PAN service portal. Enter applicant's Aadhaar details carefully, and demographic authentication will be performed with the details by clicking on Submit button. Please remember these important checklist while entering name. Applicant's name, gender and date of birth should exactly match with Aadhaar. Initials are permitted only in middle name if appearing on Aadhaar. Let's understand this with example. Please note that combination marked incorrect signs are allowed to be entered on PAN form. That too, if appears in Aadhaar in same sequence. This facility is not applicable to minor and non-individuals like HUF, firm, etc. On successful authentication, user will be navigated to applicant details. User can view and verify application details entered on earlier pages. User can edit fields like name that you would like printed on PAN card or field of other name. User will be navigated to parent details. User should enter applicant's father name. For individual applicant, father's name is mandatory, while if user selects mother name to be printed on card, then mother name is mandatory to be entered. However, in case of mother being single parent, user can select single mother flag and enter mother name.
Initials in father name and mother name are permitted only in middle name field. User will be navigated to other details. Select an option between physical PAN or only ePAN. If user selects only ePAN, then only soft copy of PAN will be sent to applicant's email ID. Select source of income, as the case may be. If source of income is salary or business profession, then office address is mandatory. Enter telephone and email ID carefully for updates of application. User will be navigated to assessing officer code, that is AO code. User will select state and city as per residential address available on Aadhaar. Based on the above selection, a list will be shown. Select area code, AO type, range code, AO number as per location. Enter place and date. User will be navigated to the confirmation page. User will check and reconfirm all the details entered in application. User will be navigated to eKYC authentication portal. Two options are available for eKYC authentication: OTP-based eKYC and biometric-based eKYC. If user selects OTP-based eKYC, then OTP will be sent on applicant's mobile and email ID registered in Aadhaar. User will have to get OTP captured through applicant for performing eKYC. On submission of valid OTP, user will get below screen of successful eKYC authentication. If user selects biometric-based eKYC, then user have to capture biometric of applicant through registered biometric device to perform eKYC. The biometric device, that is Morpho, Mantra or Precision, needs to be registered through RD service app of respective company by downloading from Google Play Store. In this case, user can select the device, capture the fingerprints and click on submit button. After successful fingerprint capture, user will get the below screen. After eKYC authentication, user will be navigated to e-sign screen. Enter 10-digit Aadhaar number and ask applicant to provide consent for e-signing PAN application. OTP will be sent to applicant's mobile number and email ID registered with Aadhaar. On successful OTP verification, user will get the below page. When user will click on OK, the page with TXN ID, TXN status, pay amount and acknowledge number generated will be displayed. PAN applicant will receive PDF and payment receipt on email ID registered in application in below format. User can check status of transaction through transaction status page. Enter request type, transaction ID and entity ID to check status. User can also check status based on application number through PAN application status page. Enter PAN application number to check the status. User can also check status on www.tin.